श्री पंचमुखी हनुमत कवचम्। अस्य श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्र मंत्रस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दः श्री हनुमान देवता राम बीजं मम शक्तिः चंद्रः कीलकम्। ओम ह्रौं कवचाय हुं ह्रौं अस्त्राय फट्। ओम हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पूर्वकपिमुखाय सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय दक्षिणमुखाय करालवदनाय नरसिंहाय सकलभूतप्रमथनाय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय पश्चिममुखाय गरुडाननाय सकलविषहराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय उत्तरमुखाय आदिवराहाय सकलसम्पत्कराय स्वाहा। ओम नमो भगवते पंचवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा। श्री पंचमुखी हनुमत कवच स्तोत्रस्य श्रीरामचंद्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचंद्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानीति शक्तिः हनुमत्प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः। ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितम् दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा। हस्ताब्जैरसिकेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिम्हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम्। श्रीरामदूताय अंजनीयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तरालङ्घिताय पिङ्गलनयनायामृतविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अंगद लक्ष्मण महाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहित रामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पंचमुखी हनुमन् मन्त्रजपे विनियोगः। ओम हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वोषट् स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा। ओम हरिमर्कटमर्कटाय डम 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 आकर्षणाय सकल संपत्कराय पंचमुखी वीर हनुमते स्वाहा। उच्चाटने ओम ढम 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 कूर्ममूर्तये पंचमुखी हनुमते परयंत्र तंत्रोच्चाटनाय स्वाहा। कम खम गम घम ngम चम छम जम झम यम टम ठम डम ढम णम तम थम दम धम नम पम फम बम भम मम यम रम लम वम शम 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 हम छम स्वाहा इति दिग्बन्धः। ओम पूर्वकपिमुखाय पंचमुखी हनुमते ठम 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ओम दक्षिणमुखाय पंचमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ओम पश्चिममुखाय गरुडासनाय पंचमुखी वीर हनुमते मम 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 सकलविषहराय स्वाहा। ओम उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय
नीलकण्ठाय पञ्चमुखे हनुमते स्वाहा। ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्माण्डनायकाय पञ्चमुखे हनुमते भूतप्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहारणाय पञ्चमुखे हनुमद्वरप्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारण द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदाम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकम् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदाम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। पार्वत्युवाच शरीरार्धमहं शम्भोर्येन प्राप्स्यामि केशव तदिदानीं समाचक्ष्व स्तोत्रं शीघ्रफलप्रदम्। नारायण उवाच अस्ति गुह्यतमं गौरी नाम्नामष्टोत्तरं शतं शम्भोरहं प्रवक्ष्यामि पठतां शीघ्रकामदम्। श्रीविष्णुरुवाच ॐ शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः शङ्करः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गे विष्णुवल्लभः शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः भवः सर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः उग्रः कपाले कामारे रन्दकासुरसूदनः गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः कैलासवासी कवचे कठोरस्त्रिपुरान्तकः वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः सामप्रियस्वरमयस्त्रयीमूर्तिर्नीश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः हविर्यज्ञमयः सोमः पञ्चवक्त्रः सदाशिवः विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः हिरण्यरेता दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोन्नगः भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः कृत्तिवासा पुरारात्रिर्भगवान् प्रमथाधिपः मृत्युञ्जयः सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः व्योमकेशो महासेन जनकश्चारुविक्रमः रुद्रो भूतपतिस्ताणो रहिर्बुद्ध्यो दिगम्बरः अष्टमूर्तिर्नेकात्मा सात्विकः शुद्धविग्रहः शाश्वतः खण्डपरशु रजः पाशविमोचकः मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो व्ययो हरिः पूषादन्तभिद्व्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः
भगनेत्रभिदव्यक्तो सहस्राक्ष सहस्रपात् अपवर्गप्रदोऽनन्तः तारकः परमेश्वरः। विष्णुना कथितं पूर्वं पार्वत्या इष्टसिद्धये शङ्करस्य प्रिया गौरी जप्त्वा शम्भुप्रसादतम्। त्रैलोक्यमनवहं देवी वर्षमेकं प्रयत्नतः अवापसा शरीरार्धं प्रसादाच्छूलपाणिनः। यस्त्रिसन्ध्यं पठेन्नित्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतं शतरुद्रतिरावृत्या यत्फलं लभते नरः तत्फलं प्राप्नुयान्नित्यमेकावृत्त्या न संशयः। सकृद्वानामभिपूज्य कुलकोटिं समुद्धरेत्। बिल्वपत्रः प्रशस्तैश्च पुष्पैश्च तुलसीदलः तिलाक्षतैर्यजेध्यस्तु जीवन्मुक्तो न संशयः। नाम्नामेषां पशुपते रेकमेवापवर्गदम् अन्येषां चावशिष्टानां फलं वक्तुं न शक्यते। ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नारायणं जगद्बीजं पुराणं पुरुषोत्तमं परिपृच्छति धर्मात्मा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः। श्रीयुधिष्ठिर उवाच किं जपन् पुरुषो मुच्येत् ध्यमलोकैकशासनात् तन्मे कथय तत्त्वेन भक्तस्य तव केशव। श्रीभगवानुवाच शृणु राजन् महाबाहो धर्मात्मन् पाण्डुनन्दन अहं ते कथयिष्यामि नरकोत्तारणं महत्। ओङ्कारात्मन्नमस्तेस्तु ऋग्यजुः सामरूपिणे यज्ञात्मने नमस्तेस्तु सर्वशास्त्रात्मने नमः। भूतभव्यजगन्नाथ सर्वभूतजगत्पते नमस्ते सर्वलोकेश महापुरुषपूर्वज। नमो मत्स्याय कूर्माय मूलप्रकृते नमः। नमो यज्ञवराहाय नरसिंहाय वै नमः। त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्ते स्वमुखायापि कूटस्थायाक्षराय च अनन्तायाच्युतायापि जामदग्न्याय वै नमः। मधुकैढवनाशाय शङ्कराय नमो नमः। रामाय विश्वरूपाय वासुदेवाय वै नमः। पीताम्बराय देवाय युगवर्णाय वै नमः। स्थित्युत्पत्तिविनाशानां हेतुरूपाय वै नमः। ब्रह्मणे वायुरूपाय रुद्ररूपाय वै नमः। धनदेशस्वरूपाय मोक्षरूपाय वै नमः। सोमाय सूर्यरूपाय हविर्गन्धाय वै नमः। परमेश्वररूपाय नमः। श्रीवत्सधारिणे बिभ्रत्सरस्वतीं वक्रे सर्वज्ञोषे नमोऽस्तु ते। लक्ष्मीप्रियाय देवाय यतशिष्यामरूपिणे प्रसीद मम दीनस्य भक्तियुक्तस्य माधव। रौरवान्नरकोद्धारात् पाहि मां गरुडध्वज। अशीपत्रवनात् पाहि शङ्खचक्रगदाधर। कुम्भीपाकान्महादेव पाहि मां शरणागतम्। अविचेः कालसूत्राञ्च पाहि मां दुःखनाशन। सूच्यागारादम्बरीशात् पाहि मां मधुसूदन। अश्रिकेशास्ति वाहिन्या वैतरण्याश्चतुर्भुज। पाहि मां कर्मसाक्षी त्वं शरणागतवत्सल। इक्षुपीडनकैर्यन्त्रः पीड्यन्ते यत्र मानवः। देशात् तस्मात् जगन्नाथ पाहि मां भक्तवत्सल। तप्तबालूकदेशश्च फलमल्यायामवल्लितः। तद्देशात् पुण्डरीकाक्ष पाहि मां करुणानिधे। कर्कचैर्यत्र पाठ्यन्ते
मानुषा देवदारुवत् तेभ्योऽपि रक्ष्य मां हंस शरणागतवत्सल सारमेयैश्च खाद्यन्ते या मे वर्तमनि मानवः महाभयात् प्रभो तस्मात् केशव क्लेशनाशन अन्ये च नरका घोरा यमलोके प्रतिष्ठितः तेभ्योऽपि रक्ष्य मां हंस नमस्तेस्तु सहस्रशः तिर्यज्ञो निगतस्यापि भक्तिर्मे तव केशव अचला स्याद्यतः कृष्ण तथा कुरु वरप्रद बहुबाहुरूपादस्त्वं बहुकर्णाक्षिशीर्षवान् सर्वतो रक्ष्य मां हंस सर्वात्मन् सर्वतोमुख नमस्ते देवदेवेश यथा पाश्यखिलं जगत् स्थितौ तथा समस्तेभ्यो दोषेभ्यो मां समुद्धर कृष्णाच्युत ऋषिकेश सर्वभूतेश केशव महात्मन् पाहि मां भक्तं वासुदेव नमोऽस्तु ते इति स्तवन्नरो राजन् सदा नारायणं प्रभुं यमलोकं न पश्येच्च नरकं च कुतः पुनः स्मरन्नापि सदा मर्त्यः शृण्वन्नापि युधिष्ठिर महापातकजैर्घोरैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषः आयुरारोग्यमैश्वर्यं श्रियं मेधां तथा बलं प्राप्नोति च पठेन्नित्यं तद्विष्णोः परमं पदं भयकान्तारदुर्गेषु तथा संसारसागरात् सत्यं सन्तरते मर्त्यः सतवश्याप्यनुकीर्तनात् अन्ते सायुज्यमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा श्रीपञ्चमुखे हनुमत्कवचस्तोत्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचन्द्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानीति शक्तिः हनुमत्प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिकेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिम्हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम् श्रीरामदूताय अञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तरालङ्घिताय पिङ्गलनयनायामृतविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहित रामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखी हनुमन् मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पञ्चमुखी वीरहनुमते स्वाहा उच्चाटने ॐ ढं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखी हनुमते परयन्त्र तन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं
तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं छं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पञ्चमुखी वीरहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठाय पञ्चमुखी हनुमते स्वाहा। ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्माण्डनायकाय पञ्चमुखी हनुमते भूतप्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहारणाय पञ्चमुखी हनुमद्वरप्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारण द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनं त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परं चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करं पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणं षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरं सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकम् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। पार्वत्युवाच शरीरार्धमहं शम्भोर्येन प्राप्स्यामि केशव तदिदानीं समाचक्ष्व स्तोत्रं शीघ्रफलप्रदम्। नारायण उवाच अस्ति गुह्यतमं गौरी नाम्नामष्टोत्तरं शतं शम्भोरहं प्रवक्ष्यामि पठतां शीघ्रकामदम्। श्रीविष्णुरुवाच ॐ शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः शङ्करः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गे विष्णुवल्लभः शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः भवः सर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः उग्रः कपाले कामारे रन्दकासुरसूदनः गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधिः भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः कैलासवासी कवचे कठोरस्त्रिपुरान्तकः वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः सामप्रियस्वरमयस्त्रयीमूर्तिर्नीश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः हविर्यज्ञमयः सोमः पञ्चवक्त्रः सदाशिवः विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः हिरण्यरेता दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोन्नगः भुजङ्गभूषणो भर्गो
गिरिधन्वा गिरिप्रियः कृत्तिवासा पुरारातिर्भगवान् प्रमथाधिपः मृत्युञ्जयः सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः व्योमकेशो महासेन जनकश्चारुविक्रमः रुद्रो भूतपतिस्ताणु रहिर्बुद्ध्यो दिगम्बरः अष्टमूर्तिर्नेकात्मा सात्विकः शुद्धविग्रहः शाश्वतः खण्डपरशु रजः पाशविमोचकः मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो व्ययो हरिः पूषादन्तभिद्व्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः भगनेत्रभिद्व्यक्तो सहस्राक्ष सहस्रपात् अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः विष्णुना कथितं पूर्वं पार्वत्या इष्टसिद्धये शङ्करस्य प्रिया गौरी जप्त्वा शम्भुप्रसादतम् त्रैलोक्यमनवहं देवी वर्षमेकं प्रयत्नतः अवापसा शरीरार्धं प्रसादाच्छूलपाणिनः यस्त्रिसन्ध्यं पठेन्नित्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतं शतरुद्रतिरावृत्या यत्फलं लभते नरः तत्फलं प्राप्नुयान्नित्यमेकावृत्त्या न संशयः सकृद्वा नामभिपूज्य कुलकोटिं समुद्धरेत् बिल्वपत्रः प्रशस्तैश्च पुष्पैश्च तुलसीदलः तिलाक्षतैर्यजेध्यस्तु जीवन्मुक्तो न संशयः नाम्नामेषां पशुपते रेकमेवापवर्गदम् अन्येषां चावशिष्टानां फलं वक्तुं न शक्यते ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणं जगद्बीजं पुराणं पुरुषोत्तमं परिपृच्छति धर्मात्मा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः श्रीयुधिष्ठिर उवाच किं जपन् पुरुषो मुच्येत् ध्यमलोकैकशासनात् तन्मे कथय तत्त्वेन भक्तस्य तव केशव श्रीभगवानुवाच शृणु राजन्महाबाहो धर्मात्मन् पाण्डुनन्दन अहं ते कथयिष्यामि नरकोत्तारणं महत् ओङ्कारात्मन्नमस्तेस्तु ऋग्यजुः सामरूपिणे यज्ञात्मने नमस्तेस्तु सर्वशास्त्रात्मने नमः भूतभव्यजगन्नाथ सर्वभूतजगत्पते नमस्ते सर्वलोकेश महापुरुषपूर्वज नमो मत्स्याय कूर्माय मूलप्रकृते नमः नमो यज्ञवराहाय नरसिंहाय वै नमः त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्ते स्वमुखायापि कूटस्थायाक्षराय च अनन्तायाच्युतायापि जामदग्न्याय वै नमः मधुकैढवनाशाय शङ्कराय नमो नमः रामाय विश्वरूपाय वासुदेवाय वै नमः पीताम्बराय देवाय युगवर्णाय वै नमः स्थित्युत्पत्तिविनाशानां हेतुरूपाय वै नमः ब्रह्मणे वायुरूपाय रुद्ररूपाय वै नमः धनदेशस्वरूपाय मोक्षरूपाय वै नमः सोमाय सूर्यरूपाय हविर्गन्धाय वै नमः परमेश्वररूपाय नमः श्रीवत्सधारिणे बिभ्रत्सरस्वतीं वक्रे सर्वज्ञोषे नमोऽस्तु ते लक्ष्मीप्रियाय देवाय यतशिष्यामरूपिणे प्रसीद मम दीनस्य भक्तियुक्तस्य माधव रौरवान्नरकोद्धारात् पाहि मां गरुडध्वज अशीपत्रवनात् पाहि शङ्खचक्रगदाधर कुम्भीपाकान् महादेव पाहि मां शरणागतं
अविचेः कालसूत्राञ्च पाहि मां दुःखनाशन सूच्यागारादम्बरीशात् पाहि मां मधुसूदन अश्रिकेशास्ति वाहिन्या वैतरण्याश्चतुर्भुज पाहि मां कर्मसाक्षी त्वं शरणागतवत्सल इक्षुपीडन् कैर्यन्त्रः पीडयन्ते यत्र मानवः देशात् तस्मात् जगन्नाथ पाहि मां भक्तवत्सल तप्तबालूकदेशश्च सलमल्यायामवल्लितः तद्देशात् पुण्डरीकाक्ष पाहि मां करुणानिधे कर्कचैर्यत्र पाठ्यन्ते मानुषा देवदारुवत् तेभ्योऽपि रक्ष्य मां हंस शरणागतवत्सल सारमेयैश्च खाद्यन्ते यामे वर्तमनि मानवः महाभयात् प्रभो तस्मात् केशव क्लेशनाशन अन्ये च नरकाघोरा यमलोके प्रतिष्ठितः तेभ्योऽपि रक्ष्य मां हंस नमस्तेस्तु सहस्रशः तिर्यज्ञो निगतस्यापि भक्तिर्मे तव केशव अचला स्याद्यतः कृष्ण तथा कुरु वरप्रद बहुबाहुरूपादस्त्वं बहुकर्णाक्षिशीर्षवान् सर्वतो रक्ष्य मां हंस सर्वात्मन् सर्वतोमुख नमस्ते देवदेवेश यथा पाश्यखिलं जगत् स्थितौ तथा समस्तेभ्यो दोषेभ्यो मां समुद्धर कृष्णाच्युत ऋषिकेश सर्वभूतेश केशव महात्मन् पाहि मां भक्तं वासुदेव नमोऽस्तु ते इति स्तवन्नरो राजन् सदा नारायणं प्रभुं यमलोकं न पश्येच्च नरकं च कुतः पुनः स्मरन्नापि सदा मर्त्यः शृण्वन्नापि युधिष्ठिर महापातकजैर्घोरैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषः आयुरारोग्यमैश्वर्यं श्रियं मेधां तथा बलं प्राप्नोति च पठेन्नित्यं तद्विष्णोः परमं पदं भयकान्तारदुर्गेषु तथा संसारसागरात् सत्यं सन्तरते मर्त्यः सतवश्याप्यनुकीर्तनात् अन्ते सायुज्यमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम् ॐ नमो भगवते पञ्चवदनाय ऊर्ध्वमुखाय हयग्रीवाय सकलजनवशकराय स्वाहा श्रीपञ्चमुखे हनुमत्कवचस्तोत्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः श्रीरामचन्द्रो देवता सीता इति बीजं हनुमानीति शक्तिः हनुमत्प्रीत्यर्थे पाठे विनियोगः ध्यानम् वन्दे वानरनारसिंहखगराट् क्रोडाश्ववक्त्रान्वितं दिव्यालङ्करणं त्रिपञ्चनयनं देदीप्यमानं रुचा हस्ताब्जैरसिकेटपुस्तकसुधा कुम्भाङ्कुशाद्रिम्हलं खट्वाङ्गं फणिभूरुहं दशभुजं सर्वारिवीरापहम् श्रीरामदूताय अञ्जनेयाय वायुपुत्राय महाबलाय सीताशोकनिवारणाय महाबलप्रचण्डाय लङ्कापुरीदहनाय फाल्गुनसखाय कोलाहलसकलब्रह्माण्डविश्वरूपाय सप्तसमुद्रान्तरालङ्घिताय पिङ्गलनयनायामृतविक्रमाय सूर्यबिम्बफलसेवाधिष्ठितपराक्रमाय सञ्जीवन्या अङ्गदलक्ष्मणमहाकपिसैन्यप्राणदात्रे दशग्रीवविध्वंसनाय रामेष्टाय सीतासहित रामचन्द्रवरप्रसादाय षट्प्रयोगागम पञ्चमुखी हनुमन् मन्त्रजपे विनियोगः ॐ हरिमर्कटमर्कटाय स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय वं 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 वोषट् स्वाहा ॐ हरिमर्कटमर्कटाय फं 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 फट् स्वाहा
ॐ हरिमर्कटमर्कटाय खं 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 मारणाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय ठं 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 स्तम्भनाय स्वाहा। ॐ हरिमर्कटमर्कटाय डं 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 आकर्षणाय सकलसम्पत्कराय पञ्चमुखी वीरहनुमते स्वाहा। उच्चाटने ॐ ढं 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 कूर्ममूर्तये पञ्चमुखी हनुमते परयन्त्र तन्त्रोच्चाटनाय स्वाहा। कं खं गं घं ङं चं छं जं झं यं टं ठं डं ढं णं तं थं दं धं नं पं फं बं भं मं यं रं लं वं शं 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 हं छं स्वाहा इति दिग्बन्धः। ॐ पूर्वकपिमुखाय पञ्चमुखी हनुमते ठं 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 सकलशत्रुसंहारणाय स्वाहा। ॐ दक्षिणमुखाय पञ्चमुखी हनुमते करालवदनाय नरसिंहाय ह्रां 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 सकलभूतप्रेतदमनाय स्वाहा। ॐ पश्चिममुखाय गरुडासनाय पञ्चमुखी वीरहनुमते मं 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 सकलविषहराय स्वाहा। ॐ उत्तरमुखे आदिवराहाय लं 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 नृसिंहाय नीलकण्ठाय पञ्चमुखी हनुमते स्वाहा। ॐ अञ्जनासुताय वायुपुत्राय महाबलाय रामेष्टफाल्गुनसखाय सीताशोकनिवारणाय लक्ष्मणप्राणरक्षकाय कपिसैन्यप्रकाशाय दशग्रीवाभिमानदहनाय श्रीरामचन्द्रवरप्रसादकाय महावीर्याय प्रथम ब्रह्माण्डनायकाय पञ्चमुखी हनुमते भूतप्रेत पिशाच ब्रह्मराक्षस शाकिनी डाकिनी अंतरिक्षग्रह परयंत्र परतंत्र सर्वग्रहोच्चाटनाय सकलशत्रुसंहारणाय पञ्चमुखी हनुमद्वरप्रसादाय सर्वरक्षकाय जं 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 स्वाहा। पठित्वेदं तु कवचं महान्तं कवचं पठेत् एकवारं पठे नित्यं सर्वशत्रुनिवारण द्विवारं तु पठे नित्यं पुत्रपौत्रप्रवर्धनम् त्रिवारं पठते नित्यं सर्वसम्पत्करं परम् चतुर्वारं पठे नित्यं सर्वमर्त्यवशङ्करम् पञ्चवारं पठे नित्यं सर्वरोगनिवारणम् षड्वारं तु पठे नित्यं सर्वदेववशीकरम् सप्तवारं पठे नित्यं सर्वकामार्थसिद्धिदाम् अष्टवारं पठे नित्यं सर्वसौभाग्यदायकम् नववारं पठे नित्यं सर्वैश्वर्यप्रदायकम् दशवारं पठे नित्यं त्रैलोक्यज्ञानदर्शनम् एकादशं पठे नित्यं सर्वसिद्धिं लभेन्नरः कवचं स्मृतिमात्रेण महालक्ष्मीफलप्रदाम् तस्माच्च प्रयता भाव्यं कार्यं हनुमतः प्रियम्। पार्वत्युवाच शरीरार्धमहं शम्भोर्येन प्राप्स्यामि केशव तदिदानीं समाचक्ष्व स्तोत्रं शीघ्रफलप्रदम्। नारायण उवाच अस्ति गुह्यतमं गौरी नाम्नामष्टोत्तरं शतं शम्भोरहं प्रवक्ष्यामि पठतां शीघ्रकामदम्। श्रीविष्णुरुवाच ॐ शिवो महेश्वरः शम्भुः पिनाकी शशिशेखरः वामदेवो विरूपाक्षः कपर्दी नीललोहितः शङ्करः शूलपाणिश्च खट्वाङ्गे विष्णुवल्लभः शिपिविष्टोऽम्बिकानाथः श्रीकण्ठो भक्तवत्सलः भवः सर्वस्त्रिलोकेशः शितिकण्ठः शिवाप्रियः उग्रः कपाले कामारे रन्दकासुरसूदनः गङ्गाधरो ललाटाक्षः कालकालः कृपानिधे भीमः परशुहस्तश्च मृगपाणिर्जटाधरः कैलासवासी कवचे
कठोरस्त्रिपुरान्तकः वृषाङ्को वृषभारूढो भस्मोद्धूलितविग्रहः सामप्रियस्वरमयस्त्रयीमूर्तिर्नीश्वरः सर्वज्ञः परमात्मा च सोमसूर्याग्निलोचनः हविर्यज्ञमयः सोमः पञ्चवक्त्रः सदाशिवः विश्वेश्वरो वीरभद्रो गणनाथः प्रजापतिः हिरण्यरेता दुर्धर्षः गिरीशो गिरिशोन्नगः भुजङ्गभूषणो भर्गो गिरिधन्वा गिरिप्रियः कृत्तिवासा पुरारातिर्भगवान् प्रमथाधिपः मृत्युञ्जयः सूक्ष्मतनुर्जगद्व्यापी जगद्गुरुः व्योमकेशो महासेन जनकश्चारुविक्रमः रुद्रो भूतपतिस्ताणो रहिर्बुद्ध्यो दिगम्बरः अष्टमूर्तिर्नेकात्मा सात्विकः शुद्धविग्रहः शाश्वतः खण्डपरशो रजः पाशविमोचकः मृडः पशुपतिर्देवो महादेवो व्ययो हरिः पूषादन्तभिद्व्यग्रो दक्षाध्वरहरो हरः भगनेत्रभिद्व्यक्तो सहस्राक्ष सहस्रपात् अपवर्गप्रदोऽनन्तस्तारकः परमेश्वरः विष्णुना कथितं पूर्वं पार्वत्या इष्टसिद्धये शङ्करस्य प्रिया गौरी जप्त्वा शम्भुप्रसादतम् त्रैलोक्यमनवहं देवी वर्षमेकं प्रयत्नतः अवापसा शरीरार्धं प्रसादाच्छूलपाणिनः यस्त्रिसन्ध्यं पठेन्नित्यं नाम्नामष्टोत्तरं शतं शतरुद्रतिरावृत्या यत्फलं लभते नरः तत्फलं प्राप्नुयान्नित्यमेकावृत्त्या न संशयः सकृद्वा नामभिपूज्य कुलकोटिं समुद्धरेत् बिल्वपत्रः प्रशस्तैश्च पुष्पैश्च तुलसीदलः तिलाक्षतैर्यजेध्यस्तु जीवन्मुक्तो न संशयः नाम्नामेषां पशुपते रेकमेवापवर्गदम् अन्येषां चावशिष्टानां फलं वक्तुं न शक्यते ॐ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नारायणं जगद्बीजं पुराणं पुरुषोत्तमं परिपृच्छति धर्मात्मा पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः श्रीयुधिष्ठिर उवाच किं जपन् पुरुषो मुच्येत् ध्यमलोकैकशासनात् तन्मे कथय तत्त्वेन भक्तस्य तव केशव श्रीभगवानुवाच शृणु राजन्महाबाहो धर्मात्मन् पाण्डुनन्दन अहं ते कथयिष्यामि नरकोत्तारणं महत् ओङ्कारात्मन्नमस्तेस्तु ऋग्यजुः सामरूपिणे यज्ञात्मने नमस्तेस्तु सर्वशास्त्रात्मने नमः भूतभव्यजगन्नाथ सर्वभूतजगत्पते नमस्ते सर्वलोकेश महापुरुषपूर्वज नमो मत्स्याय कूर्माय मूलप्रकृते नमः नमो यज्ञवराहाय नरसिंहाय वै नमः त्रिविक्रमाय रामाय वैकुण्ठाय नराय च नमस्ते स्वमुखायापि कूटस्थायाक्षराय च अनन्तायाच्युतायापि जामदग्न्याय वै नमः मधुकैढवनाशाय शङ्कराय नमो नमः रामाय विश्वरूपाय वासुदेवाय वै नमः पीताम्बराय देवाय युगवर्णाय वै नमः स्थित्युत्पत्तिविनाशानां हेतुरूपाय वै नमः ब्रह्मणे वायुरूपाय रुद्ररूपाय वै नमः धनदेशस्वरूपाय मोक्षरूपाय वै नमः
सोमाय सूर्यरूपाय हविर्गन्धाय वै नमः। परमेश्वररूपाय नमः श्रीवत्सधारिणे बिभ्रत्सरस्वतीं वक्रे सर्वज्ञोषे नमोऽस्तु ते। लक्ष्मीप्रियाय देवाय यतशिष्यामरूपिणे प्रसीद मम दीनस्य भक्तियुक्तस्य माधव। रौरवान्नरकोद्धारात् पाहि मां गरुडध्वज अशीपत्रवनात् पाहि शङ्खचक्रगदाधर। कुम्भीपाकान्महादेव पाहि मां शरणागतम् अविचेः कालसूत्राञ्च पाहि मां दुःखनाशन। सूच्यागारादम्बरीशात् पाहि मां मधुसूदन अश्रिकेशास्तिवाहिन्या वैतरण्याश्चतुर्भुज। पाहि मां कर्मसाक्षी त्वं शरणागतवत्सल इक्षुपीडनकैर्यन्त्रः पीडयन्ते यत्र मानवः। देशात् तस्मात् जगन्नाथ पाहि मां भक्तवत्सल तप्तबालूकदेशश्च सलमल्यायामवल्लितः। तद्देशात् पुण्डरीकाक्ष पाहि मां करुणानिधे कर्कचैर्यत्र पाठ्यन्ते मानुषा देवदारुवत्। तेभ्योऽपि रक्ष्य मां हंस शरणागतवत्सल सारमेयैश्च खाद्यन्ते यामे वर्तमनि मानवः। महाभयात् प्रभो तस्मात् केशव क्लेशनाशन अन्ये च नरका घोरा यमलोके प्रतिष्ठितः। तेभ्योऽपि रक्ष्य मां हंस नमस्तेस्तु सहस्रशः। तिर्यज्ञो निगतस्यापि भक्तिर्मे तव केशव। अचला स्याद्यतः कृष्ण तथा कुरु वरप्रद। बहुबाहुरूपादस्त्वं बहुकर्णाक्षिशीर्षवान्। सर्वतो रक्ष्य मां हंस सर्वात्मन् सर्वतोमुख। नमस्ते देवदेवेश यथा पाश्यखिलं जगत्। स्थितौ तथा समस्तेभ्यो दोषेभ्यो मां समुद्धर। कृष्णाच्युत ऋषिकेश सर्वभूतेश केशव। महात्मन् पाहि मां भक्तं वासुदेव नमोऽस्तु ते। इति स्तवन्नरो राजन् सदा नारायणं प्रभुं। यमलोकं न पश्येच्च नरकं च कुतः पुनः। स्मरन्नापि सदा मर्त्यः शृण्वन्नापि युधिष्ठिर। महापातकजैर्घोरैर्मुच्यते सर्वकिल्बिषः। आयुरारोग्यमैश्वर्यं श्रियं मेधां तथा बलं। प्राप्नोति च पठेन्नित्यं तद्विष्णोः परमं पदम्। भयकान्तारदुर्गेषु तथा संसारसागरात् सत्यं सन्तरते मर्त्यः शतवश्याप्यनुकीर्तनात्। अन्ते सायुज्यमाप्नोति तद्विष्णोः परमं पदम्।